am getting lots and lots of queries regarding the usage of these words. Are you also having how to use these simple words? Are you getting confused कि कौन सा वर्ड कब यूज करना है और एक्चुअल में उसको यूज क्यों करना है और कैसे करना है? So let us understand each of them one by one. Can का सिंपल स्ट्रेट मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये मैं कर सकता हूँ. क्या आप ये समझ सकते हो? क्या आप रोज हेल्दी खाना खा सकते हो? सो ये जो पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग बना सकती हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है. सो जब मुझे मेरी या किसी की भी या सिचुएशन की कैपेसिटी बतानी है या एबिलिटी बतानी है तो मैं यूज़ करूँगी कैन. Again, can is used to show ability or capacity. I can write 500 words in 1 minute. Oh, superb, 500 words. Okay, so can means showing ability or capacity. Can you keep my pet for 2 days? So that is like, are you in situation of keeping my pet? So जब भी आप कोई भी कैपेसिटी के बारे में या कैपेबिलिटी, सिचुएशन या इंसान या आप खुद की बात कर रहे हैं तो आप इसको प्रेजेंट कौन से शब्द से करेंगे? कैन से. ओके, सो लेट अस सी गुड. तो जनरली हमको एक थॉट आता है कि could मतलब can का past. Yes, absolutely. Could means the past form of can. So can I say like this? Suppose अभी इस वक्त अगर मैं ऐसा कहूँ कि I can study for 8 hours for my exam. Full stop. So means ये मैं मेरी कैपेसिटी बता रही हूँ, मैं मेरी कैपेबिलिटी बता रही हूँ कि भाई ये नेक्स्ट वीक में मेरी एग्ज़ाम है और मैं 8 घंटा पढ़ सकती हूँ. Yes, I can study. अब मान लो कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने टाइम वेस्ट किया, फ्रेंड्स के साथ में घूमा, फिर रात चिट चैट किया और मेरी एग्ज़ाम आ गई. अब मेरा काफ़ी सिलेबस बाकी है पढ़ने को और मेरे पास टाइम नहीं है और अब मैं पछता रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि यार काश मैंने पढ़ लिया होता. तो अब ये मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगी? हाउ एम आई सपोज टू और can express this? Can I say like this? Oh, I could have studied, I could have practiced, I could have worked hard. So I could have worked hard for 8 hours for my exam. So ये मेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी अभी है, लेकिन अगर मैं मेरी कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को यूटिलाइज नहीं करूँगी तो मुझे कुड यूज़ करना पड़ेगा. ओके, अब दूसरा यूज़ कुड का क्या है? एक और यूज़ है, could you please smile? Could you please help me out with this? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप प्लीज़ आ सकते हैं? सो ये सेंटेंसेस क्या है? ये सेंटेंसेस रिक्वेस्ट करना है. जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो आप
could का use करके you can frame a sentence to request something for someone. Say for example, I can say that, could you please help that man to cross the road? Could you please work accordingly? Could you please sit down? So, could के दो यूसेज है. एक तो सीधा साधा यूज कैन का पास्ट फॉर्म, दूसरा टू गिव रिस्पेक्ट और टू पे रिस्पेक्ट टू समवन, or to ask for a small help in a way of respecting or in a way of I can say a polite way of requesting something. So that is how you can use can and could. Let's see would. So what are the usages of would? इसको देखते ही हमको लगता है कि ओ ये will का past tense है, will या shall का past tense है. So let's convert them into sentence and see. He will come for the meeting he said. Means he said that he will come for the meeting. उसने बोला है कि वो मीटिंग के लिए आएगा. Okay. अब due to some circumstances, this guy doesn't turn up, doesn't come to the meeting. So ये चीज़ तो हमने अभी कही फ्यूचर के बारे में, लेकिन मान लो कि वो मीटिंग में नहीं आया, तो अब हम क्या कहेंगे? उसने बोला है कि वो मीटिंग में आएगा. अरे यार, उसने बोला था कि वो मीटिंग में आने वाला है, बट फिर भी he didn't come. अब एक और स्टेप आगे जाए. अगर वो ये मीटिंग में आया होता तो उसने ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिस नहीं किया होता. अब ये हम कैसे लिखेंगे? Any guesses? You can pause the video and go ahead and try it by yourself. Let's see. I wish he would have come for the meeting or attended the meeting So, did you understand? ये किया होता, काश आपने बहुत अच्छे से मेहनत की होती. जनरली हमारे पेरेंट्स हमको ऐसा कहते हैं जब हम एग्ज़ाम में फेयरली परफॉर्म नहीं करते, तो हमारे पेरेंट्स हमको कहते हैं कि काश आपने अच्छे से मेहनत की होती. सो आप कर सकते थे इज कैन और कुड, आपने की होती दैट इज वुड. So I guess that now you have understood how to use this would. लेकिन एक और use है इस would का जो शायद आपको पता नहीं होगा. अगर सपोज आपके घर पे आज पार्टी है और आप आपके फ्रेंड को बोलते हो कि यार आज शाम को केक लेके आना, लेकिन अब ऐसे सीधे तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा रिक्वेस्ट तो करना चाहिए. So the same situation can I say, would you please bring a cake for the party? So this is how you can convey the request of doing something with the help of would. अब आपको लगता है कि can, could और would हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं in our speaking and writing? Yes, definitely. But still we have a few more to go. Let us understand them too. Okay, so should. हम सबको should का एक जनरल फॉर्म या जनरल यूसेज पता है. जब हम किसी को एडवाइस करते हैं,
जनरली एडवाइसेस हमको हमारे पेरेंट्स या डॉक्टर्स या फ्रेंड्स करते हैं, तो दे जनरली टेंड टू यूज दिस वर्ड शुड. You should drink 8 glasses of water every day. Don't you think you should study for at least 2 hours every day? So, जब भी आपको किसी को एडवाइस देनी है तो आप should का यूज़ करते हो, लेकिन क्या आपको पता है should का एक और यूज़ है? Let me tell you. Can I say, wait, I'll write a sentence and I'll tell you to convert it with the help of should. Let's see. ये सेंटेंस हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा या सुना होगा. अब यही सेंटेंस थोड़ा सा फॉर्मल वे में हम कैसे लिख सकते हैं? Should is the appropriate word that can help us to convey the same meaning in a little sophisticated manner. Can you try? Would you like to try? Let's see. This same sentence can also be written as should you need any further details, feel free to ask for. So, with the help of should, you can successfully convert a simple looking statement into a little formal one. Whenever you are willing to show that you want something, you can state your want with the help of should. Let us see the remaining two, may and might. Now, may again is used to show possibility. जैसे कि for example, I write a sentence for you. I can say that it may snow after an hour. It's a possibility. ऐसा हो सकता है. It may snow after an hour. 1 घंटे बाद शायद बर्फ गिर सकती है. It's a possibility. Let us take one more example and try converting that with the help of might. They may come soon. शायद वो लोग जल्दी ही आएंगे. अब मान लो कि वो लोग जल्दी नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे? They might have come soon or they might have come. जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर पे गेस्ट आने वाले थे और हमको पहले से पता था कि गेस्ट जल्दी आने वाले थे. सो हमने एक अनुमान लगाया कि द गेस्ट मे कम सून, दे मे अराइव सून, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अराइविंग. And now you go out to take something for them, and while you're returning you say that, oh, I got late. अरे यार guest तो शायद आ चुके होंगे. So they might have already arrived or they might have already come. So in that case we won't require this soon. This is unnecessary. Okay, so with this I am quite sure that you might have understood the concept of all these simple looking verbs. But don't forget to practice them, because जनरली हमको ऐसा लगता है कि ये सारे वर्ड्स जो can है, could, will, shall या would, should,
मे एंड माइट, ये हमको कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इन पर थोड़ा सा वर्क करो तो काफ़ी आपके सिचुएशंस जो इन वर्ड्स से रिलेट करते हैं वो आप करेक्टली कन्वे कर पाते हो, which is very much beneficial for you in the IELTS journey.